All right, while we're waiting for some people to come back in, there's two topics I'm going to talk about. अभी मैं दो टॉपिक के बारे में बात करूंगा अभी. Number one, सबसे पहला, how to give a proper handshake. एक अच्छा हैंडशेक कैसे दिया जाता है. I've shooken most of your hands today, मैंने बहुतों का हैंडशेक किया आज, and less than half of you have a good handshake. और आधे से भी कम के पास एक अच्छा हैंडशेक हुआ है. And a handshake is part of the first impression you make on someone. एक हैंडशेक होता है सबसे पहला इंप्रेशन. So let me teach you how to give a handshake. अभी मैं आपको सिखाता हूँ एक हैंडशेक देने का तरीका. If you go to my blog, littlethingsmatter.com, I have a whole lesson on handshakes. मेरे ब्लॉग में जाइए, लिटिल थिंग मैटर में जाइए, पूरे मेरे पास वहाँ है हैंडशेक के बारे में. So the first thing you want to do is if you're greeting somebody, पहला चीज आपको करना है जो आप एक आदमी से मिलते हो. चंद्रा, हाँ. So the first thing you want to do is you want to extend your arm आपके हाथ को आगे बढ़ाना है, and look them in the eyes. उसकी आंखों की तरफ देखना है. And when you shake their hand, it's a firm handshake, not so hard that you crush their hand. इतना जोर से मत पकड़ो कि उसका हाथ तोड़ जाए. अच्छी तरह से पकड़ना But सिर्फ it's firm like you're holding a coffee cup, जैसे कॉफी के कप को पकड़ते हो. not soft and mushy. धीरे से नहीं, थोड़े से पकड़ के. And when you're shaking someone's hand, you don't let go before they do. आप उसको छोड़ना मत, वो जब पहले छोड़े तभी छोड़ना आप. Most of you today, I've shook your hand, you've let go of my hand right away, so it's a quick okay? So you don't let go until the person lets go. जब तक वो दूसरा आदमी आपका हाथ नहीं छोड़ता, आप नहीं छोड़ना. Okay? So you shake their hand, you're looking in the eye, nice firm handshake. आप उनको हाथ मिलाइए, उनकी आंखों की तरफ देखिए. Now, if you're approaching a woman, men, you should not extend your hand unless they extend their hand first. जब आप किसी लेडी के पास जा रहे हैं और तब आप अपने हाथ को आगे मत बढ़ाइए जब तक वो अपने हाथ को नहीं बढ़ाती है. But men, if you're meeting another man, you should be the first to extend your hand. पर आदमी और आदमी के बीच में अगर होता है तब आप सबसे पहले अपने हाथ को आगे. And now let's assume I came up to Chandra and I put my hand out and he didn't see it. और सपोजिंग अभी देखिए मैं चंद्रा से मिलने आ रहा हूँ और मैं अपने हाथ को मैंने आगे बढ़ाया पर चंद्रा ने मेरे को नहीं देखा. I am not putting my hand down until he shakes it. मैं जब तक आप वो शेक नहीं करता मैं अपने हाथ को वैसे ही रखूंगा उनके सामने. Okay, I'm not going to go like this. मैं ऐसे नहीं जाऊंगा. No, I'm going to hold it and then he'll see it. उसके बाद वो देख लेगा, अपने हाथ को बढ़ाएगा आगे. And keep it firm. So you had firm at the beginning, but then you let off. Keep it firm until tell the other person lets go of the hand. और उसको पकड़ते रहिए जब तक वो आगे दूसरा आदमी छोड़ता नहीं है हाथ को. Okay. If both people will. Now, yeah. We have to start. Thank you, buddy. Let's give Chandra a hand. Anytime you bring somebody to the stage, leaders, जब भी किसी को आप स्टेज के ऊपर बुलाते हो or you ask somebody to say something, या उनको बोलते कुछ बोलने के लिए, you always say, let's give them a hand. आप बोलते चलिए उनके लिए ताली मारते हैं, उनको वेलकम की. Now, ladies, लेडीज के लिए when you approach someone, जब आप किसी को अप्रोच करते हैं you extend your hand first. आप अपना हाथ पहले आगे बढ़ाते हैं. When a woman extends their hand and has a firm handshake, whoa! जब एक लेडी अपने हैंड को आगे बढ़ाती है और हैंडशेक लेती है तो बहुत बड़ा बात होता है. Yeah, very impressive. बहुत इम्प्रेसिव होता है वो. Yeah, that tells me that woman is confident. उसका मतलब लगता है वो लेडी जो है काफी कॉन्फिडेंट है. But a woman that approaches me and she's got her hands down, अगर वो एक लेडी आती है उसके हाथ नीचे है, I immediately read her as not being confident. मैं समझ लेता हूँ ये लेडी कॉन्फिडेंट नहीं है. And if she gives me a soft, squishy handshake, और अगर वो हल्का सा एक हैंडशेक देती है मेरे को, I know she's not confident. तब मेरे को मालूम चलता है वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है. And even worse is a man who gives a soft, squishy और handshake. सबसे खराब है अगर वो आदमी एक अच्छा मतलब कोमल सा हैंडशेक देता है. I have never met anybody successful, man or woman, who gives a soft, squishy handshake. मैंने अभी तक मैन हो या लेडी हो, मतलब अभी तक मेरे को ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने बहुत हल्का सा हैंडशेक दिया होगा और वो काफी कुछ अच्छा काम कर रहा है दुनिया में. Okay, now my second thing I want to share with you is your tie, men. दूसरा है टाई के बारे में. आदमी लोगों के लिए should be to the bottom of your belt buckle. वो आपके बकल जो है उसके नीचे तक होना चाहिए. When you got your tie like this, अगर आपका टाई यहाँ तक है तो that means you don't know how to tie a tie. उसका मतलब आपको टाई पहनना नहीं आता. And when your tie is like this, और अगर टाई यहाँ तक है
and you got to move it to go to the bathroom, बाथरूम में जाने के लिए उसको उठाना पड़ता है, that means you don't know how to tie a tie either. उसका मतलब आपको टाई पहनना नहीं आता. And if your tie's all wrinkly, और अगर आपका टाई रिंकल हुआ होगा, that means you don't even notice your tie's wrinkled. आपको मालूम ही नहीं आपका टाई में रिंकल हो चुका है. Okay? Now that was a bonus one, but the second thing I wanted to share with you is tips to help you lose weight. अभी मैं आपको सिखाता हूँ कुछ टिप्स आपको वेट लॉस करने के लिए. See, we're working with Dr. Dan Gubler in the United States on a beta program to help people lose weight. हम लोग एक प्रोग्राम में हैं डॉक्टर डैन गुबलर के साथ, वेट लॉस प्रोग्राम में, And it's amazing. और ये बहुत अच्छा चीज हो रहा है अभी. So I'm going to share with you 6 keys to losing weight. अभी मैं आपको सिखाता हूँ 6 वो चीज जो आपको वेट लॉस में सहाय करेगा. Number 1, you start every morning with Lean Complete. सबसे पहला सुबह में आपको लीन कंप्लीट खाना चाहिए. If you can afford it, I suggest taking 2 packets so that you're getting 20 grams of protein every morning. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको 2 पैकेट से शुरू कीजिए सुबह. When you start your mornings with a high protein, low carbohydrate breakfast, you are jump starting your metabolism. जब आप एक हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकफास्ट खाते हो तो आपका एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहता है पूरे दिन के लिए. The worst thing to start your morning with are carbohydrates. सबसे खराब चीज होगा आपके मॉर्निंग में आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएं. My second tip, मेरा सेकंड टिप, no snacking. स्नैकिंग मत कीजिए. Snacking, you don't snack for 2 reasons. आप 2 कारण के लिए आपको स्नैकिंग नहीं करना चाहिए. One is when you snack, you're going to generally be consuming carbohydrates that you shouldn't be having. जब आप स्नैक करते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जिसको आपको नहीं खाना चाहिए. And 2 is every time you snack, you run your blood sugars right back up. And when your blood sugar is high and your insulin is high, your body can't burn fat. और जैसे ही आप स्नैक करते हो तो आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन हाई चला जाता है, और जैसे ही आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन हाई चला जाता है आपके अंदर में फैट बर्निंग नहीं होता है. You want to know why India is the diabetes capital of the world? आपको जानना है इंडिया क्यों डायबिटीज का सबसे बड़ा है कैपिटल. They run their sugar up with a high carbohydrate breakfast. वो सुबह सुबह हाई कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट खा के अपने शुगर लेवल को ऊपर ले आते हैं, And before it gets down to where their body can burn fat, they run it right back up with a high carbohydrate snack. और फिर वो जैसे नीचे उतरता दोबारा उसको स्नैक्स खा के ऊपर ले जाता है. And then just before it gets down and can burn fat again, they run it right back up with a high carbohydrate lunch. और जैसे ही वो नीचे आ जाता है फिर उसको दोबारा वो लंच खा के उसको ले जाते हैं ऊपर में. And they just continue to run their blood sugars up all day long with the high carbohydrate meals you eat. इसी तरह वो अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेके अपने ब्लड शुगर लेवल को हाई में रखते हैं रोज. So number 1 tip, start your day with 20 grams of protein in the Lean Complete drink. सबसे पहला टिप, आपको 20 ग्राम्स लीन कंप्लीट के साथ शुरू करना चाहिए सुबह. No snacking. स्नैकिंग मत कीजिए. Then when you have your lunch and dinner, you have a low carbohydrate, high protein lunch and dinner. और अगर लंच और डिनर में आपको खाना है लो कार्बोहाइड्रेट्स हाई प्रोटीन लंच और डिनर. Now, I'm sorry to tell you, but you really need to cut the rice and all the breads out of your diet. जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वो चावल और रोटी से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. Your weight is determined by what goes in this mouth right here. आपका वेट आपके मुंह में क्या क्या चीज जाता है उससे बढ़ता है. It's not the exercise, it's what goes in here is the reason people are overweight. वो एक्सरसाइज से नहीं, पर आपके मुंह में क्या क्या चीज डालते हो उससे आपका वेट बढ़ता है. And in India, most all the meals are very high in carbs. और इंडिया में जितने भी खाना है कार्बोहाइड्रेट्स में काफी रिच है. Okay, so number 1 is to start your day with Lean Complete. सबसे पहला आपका स्टार्टिंग होना चाहिए लीन कंप्लीट के साथ. 2, cut all snacking out of your diet. दूसरा, आपको स्नैक्स बंद करना चाहिए. Once you begin to operate with no snacks, you'll no longer even think about having snacks. जैसे ही आप स्नैक्स लेना बंद कर दोगे थोड़े दिन के बाद आपको स्नैक्स लेना भी आपको मन नहीं लगेगा. You have low carbohydrate lunch and dinner. लो कार्बोहाइड्रेट्स आपको लंच और डिनर खाना है. No liquid carbohydrates. और लिक्विड कार्बोहाइड्रेट्स भी खाना मना है. No sugar in your coffee. शुगर, आपके कॉफी में शुगर नहीं होना चाहिए. No sugar in your tea. चाय में शुगर नहीं होना चाहिए. No fruit juice. फ्रूट जूस नहीं खाना चाहिए. Another big problem in India. Everybody's drinking fruit juice. और ये भी इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फ्रूट जूस लोग बहुत खाते हैं. Yeah, look at a little thing of fruit juice and look how many carbohydrates are in fruit juice. आप थोड़ा देखिए फ्रूट जूस के अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं. That's the worst thing. You drink fruit juice, bam, your sugar is up like bam. आप जैसे ही फ्रूट जूस खाते हो आपका शुगर लेवल ऊपर चला जाता है. Okay? Next,
Exercise for 30 minutes a day, 5 days a week. उसके बाद आपको करना है एक्सरसाइज सप्ताह में 5 दिन। Okay? So number 1, lean complete for breakfast, पहला लीन कंप्लीट ब्रेकफास्ट में, no snacks, नो स्नैक्स। high carbohydrate lunch and dinner, लंच एंड डिनर में आपको चाहिए लो कार्बोहाइड्रेट low carbohydrates. Yeah. No liquid carbohydrates. और लिक्विड कार्बोहाइड्रेट से भी दूर रहना है आपको। Yep. And then, yep, no sugar in anything. शुगर नहीं होना है चाय और कॉफी में। And then exercise, एक्सरसाइज करना है आपको 30 minutes a day, 5 days a week. 30 मिनट 5 दिन डेली। I said there was going to be 6 things, but I forgot what the 6th thing was. No, fruit juice is part of liquid carbohydrates. Oh, yes. No, that's no snacking, the 4-4-12. Anyhow, I'll think about it and tell you. I told them at lunch that I am my best in the mornings. मैंने लंच टाइम बोला था इनको कि सुबह में सबसे मैं हाई में रहता हूँ। And then as the day goes on, I'm not nearly as sharp with what comes out of my mouth. और जैसे जैसे दिन खत्म होता है मेरा एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। But hopefully what comes out of my mouth in this last session will make sense because it's very important. पर अभी जो लास्ट सेशन है मेरे मुंह से जो निकलने वाला है मेरे को लगता है सबसे अच्छा होगा अभी। So now we're going to talk about growing and developing leaders. अब हम बात करेंगे हम लीडर्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। Your ability to grow and develop successful leaders is the single most important factor in advancing rank and living the unicity dream. आपका एबिलिटी एक लीडर को बनाना उसको ग्रो करना सबसे बड़ा चीज होगा आपके रैंक्स को ग्रो करने के लिए। You see, if your business is all dependent upon you, it can only get so big. अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है तो आपका बिजनेस इतना ही बड़ा हो सकता है। Maximum leverage happens when you develop leaders that can lead their own teams so that you can take your time to develop other leaders who lead their own teams. सबसे ज्यादा ग्रोथ तभी हो सकता है जब आप जिसको लाए हो वो लीडर बनता है और वो अपने आप काम शुरू कर देता है ताकि आप दूसरी जगह में काम कर सके। I see people all over the world, they get to 30,000-40,000 points and they don't go any higher. मैं दुनिया में बहुत लीडर्स को देखा हूँ 30,000 40,000 पॉइंट करने के बाद और आगे नहीं बढ़ते। That's because they are the leader of the organization. बिकॉज वो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीडर And they don't have any leaders who are leading. It's all dependent upon them. और उनके पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उनके जैसा काम कर सकता है और वो अकेले सब काम करते हैं। I always tell my leaders, if I ask somebody who their upline is, they should never mention my name. मैं सबको बोलता हूँ अगर कोई पूछे तुमको तुम्हारा अपलाइन कौन है तुमको मेरा नाम नहीं बोलना। Or if somebody asks somebody in your downline, who's the leader, who's your upline leader, you don't want your name mentioned because that means you have no leader between you and that person. या आपके डाउनलाइन अगर उसको पूछे कि आपका अपलाइन कौन है ऐसा होना चाहिए वो आपका नाम नहीं बोले ताकि उसको लगे कि मैं मेरे ऊपर ही सब डिपेंडेंट है। So because this is so important, I want to stress one more time. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। Your ability to grow and develop successful leaders is the single most important factor in advancing rank and living the unicity dream. आपका एबिलिटी एक आदमी को लीडर बनाना ही सबसे बड़ा चीज है हमारे बिजनेस में जो आपको अपने रैंक्स को आगे ले जाएगा। Now there's 3 phases of growth in this business. हमारे बिजनेस में 3 फेज होता है। First of all is recruiting, पहला है रिक्रूटमेंट, training your people, उसके बाद ट्रेनिंग, and then leading your people. उसके बाद अपने लीडर्स को अपने लोगों को लीड करना। This is in developing a network. ये है आपके नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। Now technically you should be recruiting and selling product, टेक्निकली हमको रिक्रूटमेंट करना है और प्रोडक्ट भी बेचना है teaching your people how to recruit and sell product, और लोगों को सिखाना है रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है और प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है and then leading your organization. और अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए। Now, I'm going to share with you 6 factors in developing successful leaders. अभी मैं आपको 6 फैक्टर समझाऊंगा जो हमारे अच्छे लीडर्स बनने के लिए चाहिए। This is very simple but very important. बहुत सिंपल है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। Number 1 is you must be the leader you want to create. आपको वो आदमी बनना है वो लीडर बनना है जो लीडर आप क्रिएट करना चाहते हो दूसरों में।
You see, you're the example. आप एक एग्जाम्पल हो. The reason that I push myself so hard to be the best that I can be is because the better I am, the better example I am to the leaders that I'm coaching and mentoring. मैं अपने आप को इतना इसलिए पुश करता हूं कि मैं अगर और अच्छा बनूं तो दूसरों के लिए मैं और अच्छा एग्जाम्पल बन सकता हूं. So here's what I suggest. अभी मैं ये आपको करना चाहता हूं सजेस्ट. I have said today many times about striving for excellence. मैंने बहुत बार बोला है कि आपको बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश के लिए, Pushing yourself every day to get better. अपने आप को ठेलने के लिए, रोज अच्छे से अच्छे बनने के लिए, Looking at every little thing you're doing and say, how can I do what I'm doing better? छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना कि मैं इससे अच्छा और कैसे बन सकूं. Number 2 is never do anything that would cause a person to question your business ethics. ऐसा काम कभी मत करना जो आपको लोग क्वेश्चन करे कि आपके बिजनेस एथिक्स के ऊपर. This is huge. ये बहुत बड़ा चीज है. You can spend a lifetime building a relationship and destroy it in 5 minutes by doing something you shouldn't have done. आप पूरे जिंदगी किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, पर सिर्फ 5 मिनट लगता है किसी चीज को तोड़ने के लिए. So in this business, here's a few examples. अभी इस बिजनेस में कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं. Number 1, when you're working with somebody, never do anything that's not in their best interest. आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हो, ऐसा काम कभी मत कीजिए जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो. If you're meeting with somebody who shouldn't be placed in a manager order when they get started, don't encourage them to place a manager order if it's not in their best interest. अगर आप किसी से मिलते हो और वो मैनेजर पैक नहीं करना चाहता तो उसको आप फोर्स मत कीजिए. You got to make sure that you are treating people the way you would want to be treated. आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप लोगों को उसी तरह ट्रीट कीजिए जिस तरह आप अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं. Never, ever, ever think about recruiting somebody else's prospect. कभी भी आप सोचिए भी मत किसी दूसरे के प्रोस्पेक्ट को रिक्रूट करने के लिए. Or worse, never think about recruiting somebody else's distributor. और सबसे खराब चीज, किसी का डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप रिक्रूट करने के लिए मत सोचिए. Never suggest that somebody take 6 months without doing anything so they can resign and sign up underneath you. कभी भी ये सजेस्ट मत कीजिए कि आप 6 महीना काम करना बंद कर दीजिए और उसके बाद आप मेरे साथ आ जाइए. Vincent and I were talking about this in the car today. आज विंसेंट और मैं दोनों गाड़ी में इसी के बारे में बात कर रहे थे. Do you know this company's got a policy that if you are involved in even suggesting for somebody to resign and join down line of you, they have the ability to terminate your distributorship no matter who you are. आपको मालूम है कि हमारे कंपनी में जो प्रोसीजर पॉलिसी है, अगर आप इस तरह के बात करते हैं कि आप 6 महीने के बाद छोड़ के मेरे साथ आ जाइए, कंपनी के पास ऐसा रूल है कि आपको वो टर्मिनेट भी कर सकता है. And if you cross the line and do something you shouldn't and they suspend you, I will fully support them terminating you, even if it's one of you guys in the front row. अगर ये कंपनी इसके बारे में कुछ एक्शन लेता भी है और मेरे को मालूम चलता है कि ऐसा बात के लिए उन्होंने एक्शन लिया है, मैं कंपनी को पूरा सपोर्ट करूंगा, अगर ये पहले लाइन में बैठे हुए लोग भी हो उसमें तो भी. We will never be successful in India building our business unless people feel that we are a company of integrity. हम लोग इंडिया में कभी नहीं होंगे सक्सेसफुल अगर हम लोगों को कंपनी का पहचान ऐसा हो कि हमारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं है तो. And if you ever smell or sense anybody in your organization is doing something they shouldn't, it's your responsibility to immediately talk to them. अगर आपको ऐसा कुछ खबर मिले या आपको मालूम चले कोई इस तरह के काम करने हैं तो आपको कंपनी के नजर में इसको लेके आना है. You don't act like, oh, it's not me, it's okay. आपको ऐसे नहीं बोलना, ये तो हमारा नहीं है प्रॉब्लम, दूसरों का प्रॉब्लम है. This is your business. ये आपका बिजनेस है. Be proud. Let's build a brand that we're all proud of. इसको एक अच्छा ब्रांड बनाइए. In my case, I will never sponsor anyone who is at one time a unicity distributor. मेरे केस में मैं तो कभी भी किसी को स्पॉन्सर ही नहीं करूंगा जो एक समय यूनिसिटी का डिस्ट्रीब्यूटर का होता, उसको भी मैं कभी स्पॉन्सर नहीं करूंगा. I don't care if it's been 10 years. ऐसा भी हो कि वो 10 साल पहले था डिस्ट्रीब्यूटर, उसको भी मैं स्पॉन्सर नहीं करूंगा. Because I will stand on the stage until the day I'm dead and be able to say I have never sponsored anybody who was one time a unicity distributor. और मैं स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बोल सकता हूं जब तक मैं मर नहीं जाऊं कि मैंने किसी को भी स्पॉन्सर नहीं किया जो इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर था. And believe me, I get a lot of people who call me and say, Todd,
My upline is awful. Would you be willing to sponsor me if I sat out for 6 months? मेरे को बहुत कॉल आता है, विश्वास कीजिए, आपको लोग बोलते हैं कि मेरे अपलाइन अच्छे नहीं है, मैं 6 महीना काम नहीं करूंगा, क्या आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे? And I don't care how great their potential may be, my answer is I would not even consider it. वो कितना भी बड़ा हो, जितना भी पोटेंशियल हो, पर मैं उनको इस जैसे चीज को कभी कंसिडर नहीं करता. See, if we're going to be a giant company in India, it will be because we have built a great brand company. अगर हम लोग बहुत बड़े कंपनी हो इंडिया में, तो हमको यही होगा कि हम एक बहुत बड़े ब्रांड है इंडिया में. And you can't build any successful business or an individual on a foundation where there is a lack of integrity. और हमारा एक बड़ा बिजनेस कभी भी नहीं हो सकता इंडिया में अगर हमारे इंटीग्रिटी में थोड़ा सा डाउट हो लोगों को. And I used to come here in this country and I'd open your newspapers. जब मैं इंडिया में आता हूँ और आपके पेपर को, न्यूज़पेपर को खोलता हूँ, And it was always some top government official who was involved in some scheme or scam that now got busted. और हमेशा ऐसा खबर आता था, करप्शन का खबर आता, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का करप्शन का खबर आता था. India will not get better until its leadership gets better. इंडिया कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता जब तक उनके लीडर्स अच्छे नहीं बने. We are only as good as our leaders. हम लोग उतने ही अच्छे हो सकते हैं जितने अच्छे हमारे लीडर्स हैं. You guys in the front of the room, you're the examples. आप लोग जो आगे बैठे हो, आप ही हमारा एग्जाम्पल हो. You can never, ever, ever cross the line and have anybody even question whether or not you could be doing something you shouldn't be doing. आपको कभी अपने लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए और लोगों को इतना भी जगह नहीं देना चाहिए कि आपको क्वेश्चन करे कोई आपके इंटीग्रिटी के ऊपर. You see, I believe where there's smoke, there's fire. मैं ये जानता हूँ जहाँ धुआं है वहाँ आग जलेगा. In 27 years, not one single time has anybody ever said, Todd did something he shouldn't have done. इन 27 सालों में ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता मेरे को कि टॉड ने ऐसा काम किया है जो उनको करना नहीं चाहिए था. I've never had to defend myself by saying, oh no, that wasn't me. मैंने कभी अपने आप को ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ जो मैंने अपने को डिफेंड किया कि मैं वो नहीं था. You know the best way to keep from having somebody question your integrity? सबसे अच्छा बात है जो आपको कोई लोग आपको डाउट नहीं करे तो Is to make sure your integrity is not questionable. आपका इंटीग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करे तो. If you never do anything you shouldn't, you will never be part of any discussion where you were doing something you shouldn't have done. अगर आप ऐसा काम नहीं करते, आप नहीं करते जो आपको करना चाहिए, तो आपके इंटीग्रिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा. Men, that means no flirting with women outside of the one you're married to. जैसे हमारे लड़का या मेन और लेडीज के अंदर मैरिज से बाहर वो कुछ नहीं करना चाहिए उनको. Yeah. Flirting, you know. फ्लर्टिंग मतलब आप लोग Hey, समझते हैं. baby. This is to understand. Yeah, I've seen leaders in our company fall after getting involved in having extramarital affairs. मैंने देखा है हमारे लीडर्स हमारे कंपनी में फॉल करते हैं, अपने शादीशुदा जिंदगी से बाहर में कुछ जाके अफेयर करते हैं फिर. Yeah, so it's not just about doing the right and wrong thing in this business. It's about being a person who lives a life that you do what's right. इसमें ये रॉन्ग या राइट का बात नहीं है. आप एक ऐसे जिंदगी आपको लीड करना है, सही तरह का जिंदगी, राइट. Okay? So if we want to build a successful company, we all need to make sure we build it on a foundation of trust and integrity. हमको एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना है और इस कंपनी का फाउंडेशन होना है ट्रस्ट के ऊपर, इंटीग्रिटी के ऊपर. You want people to lose respect for you? Cross the line just one time. अगर आपको लोगों का रिस्पेक्ट लूज करना है तो अपने लाइन को आप एक बार क्रॉस कर दीजिए, बस हो जाएगा. And I'll just tell you my opinion. मैं अभी अपना ओपिनियन बोलना चाहता हूँ. If somebody does one thing one time that causes me to question their integrity, I never trust them again. अगर कोई भी आदमी एक बार कुछ खराब काम करता है जिसके ऊपर मेरे को उसके ऊपर क्वेश्चन करना पड़ता है, उसको मैं दोबारा ट्रस्ट कभी नहीं करता. And I'm not the only one. और मैं सिर्फ ऐसा आदमी एक ही नहीं हूँ. So never, not once, never cross the line for any reason. कभी भी अपने लाइन को क्रॉस मत कीजिए किसी भी कारण के लिए. There's no amount of money that's worth having somebody say, you crossed the line, you did something you shouldn't have done. सबसे खराब चीज ये हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आपको क्वेश्चन करे कि आप ही ने ये खराब काम किया है. And if you are crossing the line, you can never stand on stage and have this conversation. और अगर आपने लाइन क्रॉस किया तो आप कभी भी स्टेज के ऊपर आके इस तरह की बात नहीं कर सकेंगे मेरी तरह. And then lastly,
educate yourself on leadership. If you want to become a great leader and you want to develop leaders, read books on leadership. अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको अपने उसके उस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज बनाना पड़ेगा, अच्छा किताब पढ़ना पड़ेगा. Listen to audio programs on leadership. लीडरशिप के ऊपर ऑडियो सुन सकते हैं, Read articles on leadership. किताब पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं. Educate yourself on what makes a person a great leader. अपने आप को एडुकेट कीजिए क्या क्या चीज एक अच्छा लीडर बनाता है. Because you'll pick up one thing here and one thing there. या आप यहाँ से कुछ समझते हो, वहां से कुछ समझते हो, And the combination of all the things you're learning will make you a better leader. और ऐसे करके आप सबके कॉम्बिनेशन को लगा के एक अच्छा लीडर बन सकते हो. So number one, you must be the leader that you want to create. सबसे पहला आपको वो लीडर बनना चाहिए जिस तरह के लीडर आप क्रिएट करना चाहते हो. And it's not just these things. You need to be recruiting, you need to be selling product, you need to be the person doing the things that you want your people doing. सिर्फ यही नहीं, आपको रिक्रूटमेंट करना है, रिटेलिंग करना है, मतलब आपको वो सब चीज करना है जो आप चाहते हो आपके लोग करें. Number two, you must spend your time looking for and working with the right people. और हमेशा आपको कोशिश होना चाहिए कि आप सही लोगों की तलाश में हो और सही लोगों के साथ काम कर रहे हो. If you are recruiting properly and getting people started correctly, it takes 7 hours to sponsor one person. अगर आप रिक्रूटमेंट को सही तरह के साथ कर रहे हो, सही लोगों के साथ कर रहे हो, तो आपको 7 घंटा लगता है एक नए आदमी को रिक्रूट करने के लिए. This includes the invitation call, वो स्टार्ट होता है इनविटेशन कॉल के साथ, getting dressed up to go to meet with someone, ड्रेस पहन के उनको मिलने के लिए आप रेडी हो रहे हो, the time it takes you to meet with them, और जो समय लगता है उनको मिलने के लिए, the time that you're sitting in front of them, जब समय उनके साथ बैठ के आप बात करते हो, the time it takes you to go back home, और जो समय लगता है उनके घर से आपके घर तक वापस आने के लिए, the time it takes you to have a follow-up call, उसके बाद जो फॉलो अप करते हो उनके साथ, the time it takes you to meet them at the meeting, उसके बाद जो मीटिंग में वो आता है उनसे मिलने के लिए मीटिंग में, and then to sit in the coffee shop after the meeting to get them started, और मीटिंग के बाद कॉफी शॉप में बैठ के उनसे बात करना, and then the time it takes you to sit down with them and to get them started going over the steps to getting started, और जो समय लगता है उनके साथ बैठ के हमारे बिजनेस के बारे में समझाना, 7 hours. 7 घंटा लगता है. Now, if it takes you less time than that, it's because you're cutting corners. अगर उसे कम समय लगता है उसका मतलब आप शॉर्टकट कर रहे हो. So, don't recruit the wrong person. उसका मतलब गलत आदमी को रिक्रूट मत कीजिए. Desperate people sponsor everybody. जो आदमी डेस्परेट होता है वो सबको स्पॉन्सर करता है. Yeah, and I'm not desperate. और मैं डेस्परेट नहीं हूं. I have a value on my time of $500 an hour. मेरा वैल्यू है समय का $500 घंटे का. So if I spend 7 hours getting the wrong person started, I just spent $3,500 of my money. तो अगर मैं 7 घंटा स्पेंड करता हूं गलत आदमी के साथ तो 3500 रुपया मेरा खर्चा होता है घंटा का. One thing I learned years ago is to place a dollar value on your time. और मैंने ये समझा था सालों पहले कि घंटे का आप एक प्राइस फिक्स कीजिए अपने ऊपर, And then manage your time as if it's worth that amount of money. और उसके बाद अपने समय को मैनेज कीजिए कि उसके वैल्यू के ऊपर. So once I did that, I stopped washing my own car. उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपनी गाड़ी को धोना बंद कर दिया, I stopped cutting my grass. और मैंने हमारे बगीचे का ग्रास काटना मैं बंद कर दिया, I stopped even taking my car in to get it serviced. और मैं अपनी गाड़ी को सर्विसिंग में भी नहीं ले गया. Because I could pay people less money than my hourly rate to do those things. बिकॉज मैं लोगों को पैसा दे सकता था उस समय के लिए और मैं अपने समय को अच्छी तरह लगा सकता था. So establish what your value is. अभी आपको एस्टैब्लिश करना है आपका वैल्यू क्या है समय का, And then don't waste your time. और समय को वेस्ट मत कीजिए. I was taught by my sponsor who brought me in the business 27 years ago, the biggest waste of time is working with the wrong people. मेरे स्पॉन्सर ने 27 साल पहले ये बोला था कि सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है गलत लोगों के साथ काम करना. And after 27 years, I can tell you without question, he is exactly right. और 27 साल के बाद ये बोल सकता हूँ विदाउट क्वेश्चन कि वो मेरा स्पॉन्सर सही था. You know, half the people in India who joined as a distributor don't even place an order. आपको मालूम है इंडिया में ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के तरह और हमारा एक प्रोडक्ट भी ऑर्डर नहीं करते. Did you know that? आप जानते हो?
You know what they call that? आप जानते हो क्या बोलते हैं इसको? Stupid. Stupid. बेवकूफ, मूर्ख। Yeah, and all of you guys in the front row, और आप लोग जो पहले रो में बैठे हो, half of your people aren't placing orders. क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किए? I'm not talking about the people you're recruiting, but I'm talking about the people in your organization. मैंने बोल रहा जो आप कर रहे हो, पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है। You know how many people I've sponsored that haven't placed an order? आपको मालूम है जितने लोगों को मैंने रिक्रूट किया जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है? I'm 57 and 0. 57 place orders, 0 don't. 57 ने ऑर्डर प्लेस किया, 0 ने अभी तक नहीं किया। I've मतलब never sponsored a person who didn't place an order. अभी तक मैंने एक आदमी को स्पॉन्सर नहीं किया जिन्होंने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया। You know why? आपको मालूम क्यों? Because I won't sponsor them if they're not going to place an order. क्योंकि मैं स्पॉन्सर ही नहीं करूंगा अगर वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा तो। One of the very first questions I ask somebody is if you were to do something else with your life, why would you do it? मैं सबसे पहले ये लोगों को पूछता हूँ, अगर आप अपने लाइफ में कुछ और करना चाहते हो तो वो काम क्यों करोगे? When I present the business to somebody, I say, if you were to do this business, why would you do it? जब मैं हमारे बिजनेस को प्रेजेंट करता हूँ उसके सामने पूछता हूँ, अगर आप ये बिजनेस करोगे तो क्यों करोगे? And then when they answer the question, I always ask them, on a scale of 1 to 10, how important is that to you? और जब वो मेरे क्वेश्चन को आंसर करता है तो पूछता हूँ, ये जो कारण आपने बोला है 1 से 10 के स्केल में ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में? If they don't tell me at least an 8, I don't sponsor them. जब वो 8 नंबर तक मेरे को नहीं बोलता है 8, तब मैं उनको स्पॉन्सर ही नहीं करता। And the reason is, unless somebody has a burning desire to improve their life, they won't do what is required of them to achieve that goal. उसका मतलब है अगर उनके अंदर बर्निंग डिजायर है और वो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है तो। You see, if I was to ask you today, how many of you would like a nicer home, you'd all raise your hands. अगर मैं पूछूं आपको आज में कि आप कितने लोगों को अच्छा घर चाहिए तो आप लोग सब हाथ उठाओगे। If I was to go down on the street today and say, how many of you on the street would like to have a nice new car, they'd all raise their hand. अगर मैं रास्ते में जाऊं पूछूं सबको कितने लोगों को गाड़ी चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, सब हाथ उठाएंगे। If I was to ask them, how many of you would like to travel the world, they'll all raise their hand. अगर मैं पूछूं सबको कि आप लोग कितने में से लोग बाहर जाना चाहोगे, दुनिया देखना चाहोगे, सब हाथ उठाएंगे। You see, desire is not enough. अपने आप के अंदर डिजायर ही सब कुछ नहीं होता। It's got to be a burning desire. आपको होना है एक बर्निंग डिजायर। It's got to be a desire that is burning so much that they're willing to pick up the phone and make those calls they don't want to make. इतना बड़ा होना चाहिए डिजायर कि आपका हाथ आपके फोन में जाए और आप फोन को कान में लगा के बात करें। So the most time I'm going to waste with somebody is giving them a presentation. सबसे ज्यादा वेस्ट अगर मैं किसी को करूंगा तो मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा उनको। Because I'll never get done with a presentation without asking a person, if you were to do something else with your life, such as this business, why would you do it? बिकॉज जब भी मैं दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन तब मैं पूछता हूँ, अगर आप इस तरह के बिजनेस करना चाहोगे तो क्यों करोगे आप? And then I ask on a scale of 1 to 10, with 10 being that it is very important and 0 being it's not important at all, how important is it to you? और फिर मैं बोलता हूँ उनको एक स्केल 1 से 10 में, 10 का मतलब आप बहुत एक्साइटेड हो उस बिजनेस को करने के लिए, उस स्केल में उनको पूछता हूँ आपका इंटरेस्ट किस लेवल में है। And unless they say an 8, I will reach over and I'll shake their hand and say, thank you, I don't think that what I'm doing is right for you. अगर वो 8 तक नहीं बोलता मेरे को तो मैं बोलता हूँ थैंक यू करता हूँ, मेरे को लगता है आपके लिए ये बिजनेस नहीं होगा। I immediately take it away. और मैं उनसे मैं बिजनेस को वापस ले लेता हूँ। Because I won't spend another 5 minutes trying to recruit somebody that doesn't have a desire that's strong enough that will cause them to do what is required of them to be successful. बिकॉज मैं और 5 मिनट उनके साथ वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज उनके पास वो डिजायर ही नहीं है। So let me tell you who the right people are. अभी मैं बोलना चाहता हूँ राइट पर्सन कौन है। When I'm looking for the right person to invest my time with, I'll share with you who that person is. जो राइट पर्सन के साथ मैं समय बिताना चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो किस तरह का आदमी होगा। There are 4 attributes that describe the right person. 4 चीज है एक राइट पर्सन के अंदर। Number 1, it's the right person. नंबर 1 है वो राइट पर्सन ही है। Who is the right person? कौन है राइट पर्सन? Somebody who's got people skills and communication skills. एक आदमी जिनके पास लोगों के साथ मिलना जुलना का एक स्किल है।
Somebody who looks good and is well groomed. दिखने में अच्छा है और अच्छा कपड़ा पहनता, अच्छा प्रेजेंटेशन है उसके अंदर। Somebody that is respected. एक आदमी जिनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। Somebody that I could see that if I mentored them, I could see them standing in front of a room and giving a presentation. ऐसा आदमी अगर मैं उसको सिखाऊं तो लगता है वो आदमी स्टेज के ऊपर आके बात भी कर सकता है। Because my job is I'm going to develop leaders. बिकॉज मेरा काम है, मेरे को लीडर्स डेवलप करना है। And it's easier to find leaders than to make leaders. बहुत आसान है लीडर्स खोजना या लीडर्स बनाना। So number one, I'm looking for the right person. मैं एक राइट पर्सन के खोज में हूँ। Number two, I'm looking for the right person at the right time in their life. उसके बाद एक सही आदमी को खोज रहा हूँ उनके सही समय में। Let's take Kishore as an example. किशोर का एग्जांपल बोल रहा हूँ। When he was first introduced to this business, it wasn't the right time in his life. जब इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस, उसका समय सही नहीं था। But the person who was recruiting him continued to stay in touch with him, and 1 year later, Kishore joined the business. बट जो पर्सन किशोर के साथ टच में था, उन्होंने उनके साथ 1 साल टच पे रहा और 1 साल के बाद किशोर को इंटरेस्ट आया बिजनेस के ऊपर। Because he had a corporate position, he reached a point where he no longer wanted to do that, and he wanted to be in business for himself. बिकॉज किशोर कॉर्पोरेट पोजीशन में था, उसको एक ऐसा समय आया जिंदगी में उसको और कॉर्पोरेट में अच्छा नहीं लग रहा था और उसने एक दूसरा ऑप्शन चुना। So when I say the right time in their life, I'm looking for people that are looking for something else to do. राइट टाइम का मतलब है मैं ऐसे लोगों के खोज में हूँ जो कुछ खोज कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। Not somebody who's just looking to make a few extra rupees each month. ऐसा लोग नहीं जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बाद थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए खोज कर। So I'm looking for the right person मैं एक राइट पर्सन के खोज में हूँ at the right time in their life सही समय में उनके लाइफ में, that has the desire to build this business. और उनके अंदर डिजायर है इस तरह के बिजनेस को करने के लिए। I find people who are the right people at the right time in their life, but they want to start a restaurant or do something else. मेरे को मिलता है लोग जो राइट टाइम में है, राइट प्लेस में है, पर उनको रेस्टोरेंट खोलना पड़ता है। So I'm looking for the right person मैं एक राइट पर्सन के खोज में हूँ at the right time in their life, सही समय में उनके जिंदगी में, desire for the benefits that our business offers, उनके पास वो डिजायर है हमारे बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, and who has the money to join and do it right. और उसके पास पैसा है ज्वाइन करने के लिए और सही तरह से काम करने के लिए। People who are broke for a reason. जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं होने का एक कारण होता है। I have no interest in working with broke people. मेरे पास कुछ इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों के साथ काम करना जिनके पास पैसा नहीं है। So how do you find them? तो आप इसको कैसे पाते हो, कहाँ पाते हो इन लोगों को? 2 ways. 2 रास्ता है। Through your own recruiting efforts, आप अपने रिक्रूटमेंट से इनको आपको मिलेगा, or through the recruiting efforts of those that you bring in or those in your organization. और आपके दूसरे नीचे वाले लोग जो डाउनलाइन से उनके एफर्ट से आपको मिलते हैं नए लोग। So let's assume I met with Sanjay. अभी अज्यूम करते हैं मैंने संजय को मिला, Sharp guy. अच्छा आदमी है, Clearly a respected guy. काफी रिस्पेक्ट भी मिलता है इनको, But he's just looking to do something on the side. बट वो सोच रहे हैं कि छोटा मोटा कुछ करूं। So he's the right person, but it's not the right time in his life. तो ये है अभी ये राइट पर्सन, बट उनके लाइफ का ये सही समय नहीं है। So if he's the right person, I know he's respected and he can lead me to others. अगर ये राइट पर्सन है तो वो रिस्पेक्टेड होंगे और मेरे को दूसरे लोगों के साथ वो ले जाएंगे। So I'll sponsor Sanjay. तब मैं संजय को स्पॉन्सर करूंगा। And then when I sponsor him and I get him started, I'm going to say, Sanjay, I want you to put me in front of the sharpest, most successful people you know. और फिर संजय को बोलूंगा कि आप मेरे को सबसे अच्छे रिस्पेक्टेड लोगों के सामने ले जाइए जो आप जानते हो जिन लोगों को। So now perhaps I've exhausted my warm market, and now I'm going to Sanjay and I'm going to meet with his best people. इसका मतलब मेरे जाने पहचाने लोग खत्म हो चुके हैं, अभी मैं संजय के साथ काम कर रहा हूँ और संजय के लोगों को के बारे में जानना चाहता हूँ अभी। So and I'm meeting with his people. Who am I looking for? और अगर मैं संजय के लोगों को मिलना चाहता हूँ तो मैं कैसे लोगों के खोज में हूँ? The right person सही लोग at the right time in his life or her life, उसके जिंदगी में सही समय में, who has the desire for what our business can offer, और उनके अंदर वो इच्छा है हमारे साथ जुड़ने का, and who has the money. और उसके पास पैसा है। Now let's assume that Sanjay led me to Chandra. और अभी अज्यूम करते संजय ने मेरे को चंद्रा के पास ले आया And I meet with Chandra. I'm like, this guy's a sharp guy. और मैं चंद्रा से मिला, लगा ये अच्छा आदमी है He's good. और ये अच्छा भी है।
I can see he's the right guy. और मुझे लगता है ये राइट पर्सन है। Yeah, he's burned out doing what he's doing. He's looking for something else. ये एकदम मतलब मर चुका है और एक कुछ नया खोज रहा है। He's got the desire for what we're doing. इसके अंदर डिजायर है जो हम लोग कर रहे हैं अभी, And he's got the money. और इसके पास पैसा भी है। So now we sponsor Chandra. अभी मैं चंद्रा को स्पॉन्सर करता हूँ। So now I'm going to talk about how to work. अभी मैं बोल रहा हम लोग को काम कैसे करना है। So there's two ways to find the right person. One is you recruit him, दो तरीका है राइट पर्सन मिलने के लिए। एक है आप उसको रिक्रूट कीजिए, and two is you find him in your organization. और दूसरा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में खोजिए। So now I find Chandra. अब चंद्रा को मिला। Chandra could be just second level to me, or Chandra could be seventh level to me. चंद्रा मेरा सेकंड लेवल हो सकता है या सातवें लेवल में हो सकता है। I could have sponsored a person who's respected, who led me to other people, and all of a sudden, 7 levels down, I find that guy right back there. तो मैंने स्पॉन्सर किया जो लोग मेरे को स्टार्ट रहे वो एक आदमी को, उसके बाद उन्होंने मेरे को लीड किया 7वें नंबर तक। I don't care if he's on my 7th level, और मैं केयर नहीं करता वो मेरे 7वें लेवल में है क्या, because I'm going to take him on like he's front line. मैं ऐसे काम करूंगा उसके साथ वो मेरे 1 लेवल में होंगे। And these people here, they're all going to have to go get wide to be paid on his organization. और जो उसके बीच में जितने भी लोग हैं सब खुश होंगे बिकॉज उनको पैसा मिलेगा। And when you understand our compensation plan, you'll be paid on infinity. So all these people, they benefit, but I'm going down there, I'm looking for him. और जैसे हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में आपको जानते हैं आपको इन्फिनिटी में पैसा मिलता है। जब मैं चंद्रा के साथ काम करूंगा 7वें लेवल में सब लोग खुश होंगे। So let's assume Chandra is the person I find. अभी अज्यूम करते चंद्रा को मिल गया। When he comes in the business, I am the person that is going to sponsor him downline of Sanjay. जब वो आएंगे बिजनेस में तो मैं चंद्रा को संजय के डाउनलाइन में स्पॉन्सर करूंगा। I'm going to be the one to sit down with him and to talk to him about how to get started. मैं बैठूंगा चंद्रा के साथ बैठ के उसको समझाऊंगा किस तरह स्टार्ट किया जाता है बिजनेस। Because he's who I've been looking for. बिकॉज मैंने इस तरह के आदमी को ही मैं खोज कर रहा हूँ। I'm not going to say, Sanjay, you get him started. मैंने नहीं बोला कि संजय तुम उनको स्टार्ट करो। Because the way I get him started, I'm teaching him how to get other people started. बिकॉज जब जैसे मैं चंद्रा को सिखा रहा हूँ कैसे स्टार्ट करना है, मैं सिखा रहा हूँ कि दूसरे लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। I call this person the locker. मैं इस आदमी को नाम देता हूँ लॉकर। They lock in the leg. ये सबको लॉक कर देते So हैं। now I take Chandra, I sit down with Chandra and review with him the steps to getting started. और मैं चंद्रा के साथ बैठता हूँ और सारा उनके साथ प्लानिंग करता हूँ। We schedule appointments to meet with his best people. और फिर चंद्रा को साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ कि तुम्हारे अच्छे लोग कहाँ हैं। I talk to him every day to make sure that I'm reviewing with him what he's saying on these calls to make sure he's inviting right. और मैं चंद्रा के साथ रोज बात करता हूँ और पूछता हूँ तुम किस तरह से लोगों के साथ बात कर रहे हो, किस तरह से इनवाइट कर रहे हो लोगों को। I'm going with him to meet with his first few people so that he can see me give a presentation. और उसके बाद मैं चंद्रा के साथ ट्रैवल करता हूँ, जाता हूँ मिलने के लिए लोगों के पास और मैं दिखाता हूँ किस तरह मैं उनको प्रेजेंटेशन देता हूँ। I'm going to help him get his first few people started so he can watch me get them started the exact same way I got him started. और फिर मैं चंद्रा को हेल्प करूंगा उसके नीचे वाले लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए। Then he's the one that I mentor and work with. और उसके बाद मैं चंद्रा के साथ काम करूंगा। Now let's take this person back here 7 levels deep. और अभी वो 7 लेवल डीप में जो आदमी है If he's a player, वो भी एक राइट पर्सन है। none of these people have a problem with me working with him. आप लोग बीच में जितने भी लोग हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ अभी। They're like, go Todd, go! सब बोल रहे टॉड जाइए नीचे जाके काम कीजिए। Yeah, they want me working with him because they're like a little bit nervous about him. बिकॉज वो लोग सब नर्वस भी हैं और वो बोल रहे आप काम कीजिए उनके साथ। So I'm going to take him and I'm going to treat him like he's front line. और मैं उनके साथ काम करूंगा ऐसे वो मेरा फ्रंट लाइन है। I'm going to be talking to him every day, रोज बात करूंगा उसके साथ reviewing with him what he's saying on his invitation calls. और किस तरह से वो इनवाइट करे लोगों को और मैं रिव्यू करूंगा। Who'd you call today? आपने किससे बात किया आज, How did you invite this person? कैसे इनवाइट किया उसको, What was their response? उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, What did you say? उसके बाद आपने क्या बोला, What did they say? उसने क्या बोला, What did you say? आपने क्या बोला, What did they say? उसने क्या बोला, What kind of commitment did you get? क्या कमेंट मिला आपको। And then I say, hey, you did it really well. फिर मैं बोलता हूँ अच्छा काम किया तुमने, Great job. अच्छी काम किया, There's a few little things that you can do better. थोड़ा सा काम हाँ वहाँ करना पड़ेगा तुमको। I share with them those few things. वो छोटी बात के बारे में बोलता हूँ उनको। We talk the next day. उसके बाद दोबारा बात करते हैं, How many people did you call? कितने लोगों से बात किया, 3. 3, What were their names? क्या नाम था उनका,
Let's start with the first person. पहला पर्सन कौन है? How did you invite this person? कैसे इनवाइट किया उसको? What was their response? उसने क्या रिस्पॉन्ड किया? What did you say? तुमने क्या बोला? What'd they say? उसने क्या बोला? What'd you say? उसने क्या बोला? What'd they say? तुमने क्या बोला? How'd you get a firm commitment? क्या मिला तुमको कमिटमेंट? Great. Better than yesterday. Fantastic. इसमें तुमने बहुत अच्छा काम किया, कल से अच्छा काम किया But तुमने। here's just a couple little things you could do better. थोड़ी चीज है यहाँ में तुमको रिफाइन करना You पड़ेगा। see, because I mastered the invitation process, I know all the little things that I could teach him. अभी मैंने अपने इनविटेशन प्रोसेस को मास्टर किया हुआ है, तो मैं सब जानता हूँ कहाँ मैं उनको सिखा सकता हूँ। So now I take him on like he's front line. अभी मैं वो मेरे फ्रंट लाइन में मैं उनको ले लेता हूँ, We're talking every day. रोज बात करते हैं। He's got no problem talking every day because he's the right person. He's excited. He wants what we have. He's happy to talk to me every तो वो day. उसको प्रॉब्लम है नहीं, वो बहुत खुश है मेरे साथ बात करके। The people who don't want to talk every day aren't the right people. जो लोग रोज बात नहीं करना चाहते वो राइट पर्सन, they are not the right person। Yeah, they're not the right person. The ones who don't want to say, "Oh, we don't need to talk today," they're not the right person. जो लोग आपसे रोज बात नहीं करना चाहते वो राइट पर्सन नहीं है। But here's a key. ये है चाबी। If you're spending your time working with the wrong people, you'll never find the right people. अगर आप गलत लोगों के साथ काम करते रहते हो तो आपको सही लोग नहीं मिलेंगे। Do you see those big fish I had? वो देखा आपने, बड़ा मछली मैंने पकड़ा था। That's because I go fishing with big pieces of bait. इसके लिए कि मैं बड़ा बड़ा खाना लेके जाता हूँ मछली मारने के लिए। When you fish with little bait, you catch little fish. छोटा खाना दोगे तो छोटी मछली आते हैं, And if you spend all your time catching little fish, you never catch the big fish. और अगर समय छोटी छोटी मछली पकड़ते हो तो बड़ा मछली कब आएगा? So I go out there, I'm not interested in little fish. I've caught many of them in my day. और मैं छोटी मछली के खोज में नहीं हूँ, बड़ा मछली के खोज में हूँ। I'm going for the record fish. हाँ, Record. Diamonds. That's who I'm looking for. Diamonds. Ready to be made. Yeah. All right. So this is the second thing. You got to spend your time looking for, and working with the right people. यही आपको देखना है, आप खोज करोगे सही लोगों का और उनके साथ काम करोगे। And sometimes I'll come to cities where I'm looking for that right person. कभी कभी मैं ऐसे जगह में आता हूँ जहाँ मैं सही लोगों की तलाश में हूँ। I could have a whole room full of people and not one of them is my locker. ऐसा हो सकता है पूरा रूम भर्ती है पर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा लॉकर हो सकता है। So you know what I tell the people? तो क्या मालूम मैं क्या बोलता हूँ लोगों को? If any of you meet with somebody that is super sharp and you're really impressed with them, put them on the phone with me. उन लोगों को बोलता हूँ अगर आपको ऐसा लोग मिले, बहुत स्मार्ट लोग, अच्छा लोग, मेरे साथ उनको फोन में लगा दीजिए। Because what I'm hoping is that somebody in that room leads me to the locker. बिकॉज मेरे को मालूम इस रूम में इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं मेरे को वो लॉकर तक ले जाएंगे। And then when I have that locker back there, और जैसे वो लॉकर मिलता है पीछे में मेरे को, I'm teaching him to find a locker in each of his 3 main legs. और उसको मैं फिर सिखाता हूँ तुम अपने लॉकर को खोज करो। And then I'm teaching him how to teach his 3 main lockers how to find lockers in each of their 3 legs. फिर मैं उसको सिखाता हूँ उसके नीचे वाले लोगों को कैसे वो सिखा सकता है लॉकर लाने के लिए। This is why I have hundreds of diamonds in my organization, friends. इस तरह मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 डायमंड्स हैं। I teach them all this. मैं उनको यही सब सिखाता हूँ। Yeah. You talk to any of my big leaders, they've all heard me talk about this before. मेरे बड़े लीडर्स को पूछेंगे आप मेरे बारे में, सबने सुना है इसके बारे में, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। So number 3, you must build meaningful relationships. 3 नंबर में है आपका रिलेशनशिप मीनिंगफुल होना चाहिए। See, when you find these people, you're looking to build a lifelong friendship with them. देखिए जब ये सब लोग मिलते हैं इनके साथ आप एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप तैयारी कर रहे हैं। Yeah, I mean, take Kishore for example. I'm hoping that we grow old together. किशोर का एग्जांपल लीजिए, मेरे को लग रहा है हम दोनों ग्रो हो रहे हैं एज के साथ। And I'm hoping I grow old with all of you too. और मेरा देखिए, मेरे तो आप लोग से ज्यादा उम्र हो चुका And है। all of you. और सब लोगों के comparison Yeah. में। I'm looking to build lifelong relationships with these people that I'm working with. मैं एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के खोज में हूँ। I know their birthdays.
मैं सबका बर्थडे जानता हूँ, Yeah, I know their spouses' names. मैं उनके वाइफ्स के नाम जानता हूँ, Yeah, their children's उनके names. बच्चे के नाम जानता हूँ। I'm focused on building relationships with these people. मैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाने का फोकस में हूँ, Because the more I have a close relationship with them, the less likely they are to ever quit. जितना मैं क्लोज हूँ उनके साथ उतना चांस कम होता है उनको क्विट करने का। And if they ever get discouraged and they think about quitting, if I've got a good relationship with them, they'll come and talk to me. और कभी भी अगर वो क्विट करने का सोचे और उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप है, छोड़ने से पहले वो मेरे को फ़ोन भी करेंगे। And then when I talk to them, I can understand what they're going through and try to help them. और उनके साथ बात करने के बाद जब मैं समझता हूँ और मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ फिर। So, number one, understand that you're looking to build lifelong, not just a week, a month, a year, lifelong relationships with these people. ये आपको समझना है, आप एक सप्ताह एक महीना का नहीं, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। And you're going to hear me say more about this throughout the weekend, but people must like, respect, and trust you if they're going to follow you. ये इसके बारे में आप मेरे को हमेशा सुनेंगे बोलना कि लोग आपको लाइक करना है, आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे या ट्रस्ट करेंगे। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। Because if people don't like you, they're not going to follow you. जो लोग आपको लाइक नहीं करते वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। If they don't trust you, they're not going to follow वो you. अगर आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। And if they don't respect you, they're not going to follow you. और अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आपको, वो फॉलो भी नहीं करेंगे। And here's the thing too, the more they respect you, the more they're going to listen to every word you say. और ये भी हो सकता है अगर वो ज्यादा आपको रिस्पेक्ट करे तो आपके मुंह से जो सब निकलते हैं वो ज्यादा सुनेंगे। So there's levels of respect. तो रिस्पेक्ट का भी लेवल होता है। And the more they respect you, the more they're going to follow your leadership. ज्यादा से ज्यादा अगर वो रिस्पेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा फॉलो करेंगे आपको। And the more influence you're going to have on the decisions they're making and on what they're doing to build their business. और आपको इन्फ्लुएंस भी होगा उनके ऊपर। Number 4, you must edify your emerging leaders. और दूसरा है आपके जो लीडर्स उभरते हुए लीडर्स हैं उनको एडिफाई करना होता है आपको। So let's assume that I'm coming to this market for Dr. Shastri. अभी अज्यूम करते हैं कि मैं इस मार्केट में आया हूँ डॉक्टर शास्त्री के लिए। I want everybody in this market to follow him, not me. मैं चाहूंगा कि इस मार्केट में सब डॉक्टर शास्त्री को फॉलो करें, मेरे को नहीं। So I'm going to edify him every time I'm in his market. और फिर मैं उनको एडिफाई करूंगा जब भी मैं उनके मार्केट में रहूं तो। I'm going to do it in front of the room. मैं रूम के आगे करूंगा इसको। Because if I really think this guy is an amazing guy, and I do, I wouldn't say I do if I don't. But if I believe this guy is amazing, I'm going to tell everybody, hey, I love him. He is a great leader. जब मैं जानूंगा कि ये सचमुच एक बहुत अमेजिंग आदमी है तो मैं सभी को बोलूंगा इसके बारे में, सही तरह से बोलूंगा। So I'm in a sense using my credibility and passing that influence to him. मेरे क्रेडिबिलिटी को लेके मैं इनके ऊपर मैं पास करता हूँ लोगों के सामने कि ये भी एक अमेजिंग पर्सन है। Because if I edify him and you guys feel, hey, Todd really thinks highly of this guy, then you're more likely to follow him than if I am not edifying him. मेरे तरह के आदमी अगर मैं डॉक्टर शास्त्री को एडिफाई करूं और आप लोग सुने कि टॉड जैसे आदमी इनको एडिफाई कर रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा बनता है डॉक्टर शास्त्री के बारे में आपको अच्छा समझने का। I'm going to do it publicly. मैं पब्लिकली करूंगा इसको। And maybe I'm in this market and I'm meeting with you and one of your prospects. और मैं भी इस मार्केट में मैं कहीं और हूँ और किसी दूसरे के प्रोस्पेक्ट के साथ हूँ। I'm going to say, hey, the leader in this market, Dr. Shastri, you'll meet him. मैं बोलूंगा इस मार्केट का लीडर है डॉक्टर शास्त्री, उसको मिलिए आप। Great leader. वो बहुत अच्छे लीडर है। You will love him. उसको आप बहुत पसंद करोगे। He is a master of this business. वो इस बिजनेस का मास्टर है। He has built a fast-growing team. उसने सबसे फास्ट टीम बनाया है। You're going to love this man and you're going to love learning from him. आप उनको मिलके बहुत पसंद करोगे। I'm also going to take him aside and tell him you're doing a great job. और मैं उनको डॉक्टर शास्त्री को एक साइड में लेके आऊंगा और बोलूंगा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। Because if he respects me and I'm edifying him, he's going to feel, hey, Todd thinks highly of me. और अगर डॉक्टर शास्त्री मेरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और मैं उनके साथ ऐसे बात करता हूँ तो वो भी बहुत खुश होंगे ये सुन के मेरे। So you need to edify your leaders. आपको अपने लीडर्स को एडिफाई करना है। Now, you need to be careful you're not edifying people that you shouldn't be edifying either. इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। जिसको एडिफाई नहीं करना है अगर उसको करते हो तो आपको
गलत कुछ हो सकता है। Because if he's doing things he shouldn't be doing, and I'm edifying him, and you know he's doing things he shouldn't be doing, now I lose credibility because I'm edifying somebody I shouldn't be edifying. अगर हमको मालूम है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपको भी मालूम है वो कुछ गलत काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी मैं उनको एडिफाई करता हूं तो काम खराब भी हो सकता है। Now I have to include my friend Sharma over there. अभी मैं शर्मा जी को भी इंक्लूड करना चाहता I've हूं। not said his name one time today, but I have been with him since the beginning here, मैंने उनका नाम एक बार भी नहीं लिया पूरे दिन में। all over India. मैं उनके साथ पूरे इंडिया भी मैं घूमा Yeah, हूं। and look at him qualifying now, Ruby, right? आज आप Yeah. देखिए वो रूबी क्वालिफाई किए हैं। You know how many rubies there are in India? आपको मालूम कितने रूबी है इंडिया में? You know how many qualified last month, Ruby? कितने क्वालिफाई लास्ट मंथ हुए हैं रूबी? One, right? That man right there. Yeah. And Santush qualified executive director last month, yeah? नो पीडी। PD, exactly. PD, I'm sorry. Wrong term. संतोष पीडी क्वालिफाई किए हैं लास्ट मंथ। And Chandra, I've been with him since the beginning. और चंद्रा जी से का साथ मैं शुरुआत से हूँ He's like the big teddy bear. I love him. और वो हमारे टेडी Yeah. बेयर हैं। Yeah, teddy bear. And I beat the crap out of you sometimes, don't I, brother? कभी कभी मैं इनसे जोक कर लेता हूँ But he loves me, and so we have a relationship where I can tell him things that can help him. और वो मेरे चाहते हैं और मैं उनको बहुत कुछ बहुत सिखा भी सकता हूँ। And he's great at receiving feedback from me, which makes me respect him even more. और वो मेरे से बहुत अच्छा फीडबैक भी लेते हैं और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। Okay? And obviously, my friends from Delhi, the Boras, you guys have done an amazing job up there. Congratulations leading that market. और यहाँ हमारे दिल्ली से भी लोग आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। And you're new, and I forgot your name, which is awful for me, but remind me your name. भगत बेरिया। भगत Beria. बेरिया। Yes, yes. I don't know a whole lot about you, but you've impressed me so far. मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता पर तुमने मेरे को बहुत इम्प्रेस किया है। Yeah, he always looks good. He always presents himself well. तुम दिखने में बहुत अच्छे हो, अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हो Always very respectful. और बहुत रिस्पेक्ट भी लाते हो। Yeah. I'm proud of our leadership here. मैं बहुत प्राउड हूँ हमारे लीडर्स को देख के। Number 5 is you must teach your emerging leaders how to be effective presenters. 5 नंबर में है आपके जो उभरते हुए लीडर्स हैं एक अच्छा प्रेजेंटर कैसे बन सकते हैं। Yeah, if you're going to grow a leader, you need your leaders to be able to do presentations. अगर आपको लीडर्स ग्रो करना है तो आपको लीडर को सिखाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन किस तरह किया जाता है। And not just presentations, they need to be great presentations or their markets won't grow. सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं, सब बेहतर प्रेजेंटेशन करने को उनको सीखना चाहिए। See, if I've got a leader in a market and he doesn't do great presentations, the distributors in that market don't want to bring their best people because they're afraid that they're going to be embarrassed because this guy doesn't do a good presentation or this woman. अगर वो लीडर अच्छा प्रेजेंटर नहीं है तो उनके डाउनलाइन उनके गेस्ट को नहीं लाएंगे उनके सामने बिकॉज उनको लगेगा कि हमारा लीडर हमारे गेस्ट को इम्प्रेस नहीं कर पाता। So when I'm sitting in the room and I'm watching my leaders give a testimonial or present, I'm looking at every little thing they can do better and I tell them. जब मैं एक रूम में बैठा रहता हूँ और मेरे लीडर्स को देखता हूँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, मैं सब कुछ के ऊपर नजर रखता हूँ और उसके बाद उनको बोलता हूँ किस तरह से सही तरह से किया जाता है। Now there's no leaders I spent more time with in this market than Chandra and Kishore. इस मार्केट में सबसे ज्यादा समय मैं चंद्रा और किशोर के साथ बिताता हूँ। Therefore there's no leaders I've given more feedback to, critical feedback, than these two men. उसका मतलब है इन दोनों के ऊपर मैं कितना क्रिटिकल हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। Because everything, 100% of the things that I see that they could do better, I tell them. और मैं इनको 100% जितने भी चीजें सब तरह के बात इनके साथ करता हूँ मैं। I don't choose, oh, I'm not going to say anything about that. मैं ऐसा नहीं कि मैं शायद इसको नहीं बोलूँ क्या ये सब बात। No, I tell them. मैं सब बोलता हूँ। Because the only way I could help them is by bringing awareness to the things they can do better. एक ही तरह से मैं इनको हेल्प कर सकता हूँ कि बोलूँ कि आप किस तरह किसको ठीक कर सकते हो। So when my leaders are emerging, the first thing they do is give a testimonial at a meeting.
सो मेरे emerging लीडर्स जो है, उभरते हुए लीडर, सबसे पहला वो क्या करते हैं, अपना टेस्टिमोनी देते हैं. So I teach them how to give a good testimonial और मैं सिखाता हूं कि आप एक अच्छा टेस्टिमोनियल कैसे दे सकते हैं, and how to be clear and concise in that testimonial. कैसे आप क्लियर हो सकते हैं और लोगों को तक पहुंच सकता है आपका मैसेज. As an example, एग्जाम्पल के लिए, hi, my name is Todd Smith. हेलो, मेरा नाम टॉड स्मिथ है. My background is as a residential real estate agent. मेरा बैकग्राउंड है एक रियल एस्टेट का. I reached a point in my career, perhaps like some of you, where I decided I didn't want to sell real estate the rest of my life. मेरे करियर का एक पॉइंट में आया जब मेरे को लगा कि और मेरे को ये काम नहीं करना. So I started exploring my options and I was introduced to unicity. और फिर मैंने अपने ऑप्शंस को देखा और यूनिसिटी मेरे सामने आया. At first, to be honest, I was a little skeptical. सबसे पहले मैं थोड़ा सा डर भी रहा था इसके बारे में. But the more I looked at this company and its products and leadership, the more impressed I became. और जितने ज़्यादा स्तर में इस कंपनी के ऊपर, इस प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया, मेरे को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ. So I got started. और फिर मैंने स्टार्ट किया. And I have been super impressed with the response that I've had by the people I've introduced this to. और उसके बाद मेरे को बहुत इंप्रेशन भी बहुत अच्छा है, बिकॉज जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उनका भी बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला. Not only have I had great results on the products, but so have all my friends. सिर्फ मेरे को ही नहीं प्रोडक्ट के ऊपर रिजल्ट मिले, बट मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला प्रोडक्ट्स के ऊपर. I am proud to be part of this company and to work with all this great leadership. मैं बहुत प्राउड हूँ इस कंपनी के साथ काम करके और मेरे साथ जो लोग हैं मेरे साथ. Thank you. थैंक यू वेरी मच. Business testimonial. ये है मेरा बिजनेस टेस्टिमोनियल. I said my name, मैंने क्या बोला, मेरा नाम, my background. मेरा बैकग्राउंड. I didn't waste any words. मैं एक शब्द भी वेस्ट नहीं किया. Now, I shared kind of that I reached a point in my career where I was looking for something else. मैंने बोला है कि मेरे करियर में ऐसा समय आया कि मेरे को कुछ और करने का दिल था. I didn't get into details that people couldn't relate to. मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बोला आपको. And I said, I'm sure many of you have probably thought you don't want to do what you're doing the rest of your life either. और मैंने यही बोला कि आप लोग से बहुत लोग हैं, आप मेरी तरह ही आपने सोचा होगा कभी. And I said I was skeptical और मैंने ये बोला कि मेरे अंदर डर था. because the guests are skeptical. बिकॉज हमारे सामने जो गेस्ट होते हैं उनके अंदर भी You see, होता I'm है डर. trying to relate to the people in the room. मैं लोगों के साथ रिलेट करना चाहता हूँ अभी. So I'm clear, मैं क्लियर हूँ, concise, एकदम शॉर्ट, no wasted words. और समय का नुकसान नहीं कर रहा. And even with translation, I bet that was less than 2 minutes. और ट्रांसलेशन के साथ भी 2 मिनट से कम नहीं बोला मैंने. Now other people get up here and blah 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 blah. और यहाँ क्या हो रहा है आपको मालूम है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, लंबा लंबा बात कर रहे हैं यहाँ में. टेस्टिमोनियल, Yeah, and it's awful. ये सुनने में अच्छा नहीं लगता. So when I'm working with leaders, I'm teaching them how to give good testimonials. जब हम लीडर्स के साथ काम करते हैं तो लीडर को सिखाते हैं किस तरह अच्छा टेस्टिमोनियल दिया जाता है. Because that's the first time they're getting in front of a group is giving a testimonial. और वही चीज सबसे पहला हमको किया जाता है लोगों के सामने. Maybe they became a director and now they're coming up as a director and sharing their story. मे भी आप बन के हैं डायरेक्टर, अभी डायरेक्टर बन के अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे. And I'm sitting there listening very closely thinking, how could I help him get better? और मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ उनको बहुत क्लोजली कि इसको और बेहतर कैसे वो कर सकता हूँ. And then we go out to dinner afterwards और उसके बाद खाने में जाते हैं रात को and I say, hey, you did a great job. और बोलता हूँ तुमने अच्छा काम किया, But I just have 2 little suggestions. बट मेरे को तुमको 2 सजेशन करना है. I give the suggestions अब मैं बोलता हूँ उनको, and then I say, you really did a fantastic job. I'm proud of you. बोलता हूँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपका प्राउड हूँ. मैं So I do that with my new people. I give them the sandwich. I say something good. मैं यही करता हूँ नए लोगों के साथ, पहले अच्छा बोलता हूँ उनके बारे में, I give them the feedback फीडबैक देता हूँ, and I say something good again. उसके बाद मैं बोलता हूँ और कुछ बोलता हूँ. Now with Chandra and Kishore, I leave the bread off and I go straight to the meat. और हमारे दोनों के बीच में चंद्र और किशोर में मैं तो इतना भी नहीं करता, पूरे सीधा डालता हूँ मैं जाके. Because we have relationships that I don't need to give them all that fluff. I can just give them feedback and they're grateful for it. बिकॉज हमारे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि मेरे को उनको मैं समझा बुझा के नहीं बोलना पड़ता मेरे को. Okay? So I'm looking to help them with testimonials. मैं अभी टेस्टिमोनियल के बात कर रहा हूँ. Clear and concise. वो एकदम क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए. To make sure they're relating to the people in the room. ये ऐसा होना चाहिए कि लोग को समझ में आए. Not rambling. नो ऐसे ब्ला ब्ला जो बोला उन्होंने वैसे बात करते नहीं जाना चाहिए. And then when it's their turn to do part of a presentation, maybe the product part, I give them an overview of how they should do that. और अगर ऐसा समय आए कि उनको प्रोडक्ट के बारे में बोलना है, तब मैं सबसे पहले उनको मैं सिखाता हूँ How किस तरह much से बोला जाता है, time they should allocate to each product. कितना समय दिया जाना चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर.
And then when they do the product presentation, I'm sitting down और जब वो देते प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मैं उनको देखता हूँ बैठ के and I'm looking at every little thing I can share with them to help them get better. और मैं सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देता हूँ जहाँ मैं उनको काम करना है And then we go out and have a cup of coffee afterwards. और उसके बाद हम लोग बाहर जाते कॉफ़ी पीते हैं Hey man, you look good up there. और मैं बोलता हूँ अच्छी बात बोलता हूँ तुमको अच्छा लगा था इस बार You presented yourself very well. अच्छा दिया प्रेजेंटेशन तुमने But when you were covering Slim, you kind of got off track, if you remember when you were talking about your aunt. बट तुमने जब स्लिम के बारे में बोला वहाँ तुम थोड़ा हिचकिचा गए थे I wouldn't go down that road in the future. मैं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था Stay on track. तुमको ट्रैक में रहना चाहिए When you're talking about super chlorophyll, you said something about a friend who had cancer that helped. Hey, don't bring up anything about cancer on stage. तुमने जब सुपर क्लोरोफिल के बारे में बोला था कुछ कैंसर के बारे में बोला था देखो कैंसर के बारे में इस टॉपिक में मत लाओ Yeah, if we have somebody from the regulator in our meeting room and they hear you talking about cancer, you're going to get us in trouble. अगर कोई रेगुलेटर का आदमी हमारे रूम में बैठा रहे तो हमको ट्रबल भी हो सकता है इसके ऊपर And if you're talking about cancer, you're going to have other people talking about cancer. और तुम कैंसर के बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हारे डाउनलाइंस भी वो बात करना शुरू कर देंगे So I also police my own people. मैं अपने लोगों को भी पुलिस का जैसे काम करता I हूँ don't need the company to police my people. I police them. मैं खुद करता हूँ ये पुलिसिंग का I काम want to protect the business. मैं बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ So you must teach your emerging leaders how to become effective presenters. आपके एमर्जिंग लीडर्स जो है उभरते हुए लीडर्स को सिखाना है आपको वो कैसे एक अच्छा प्रेजेंटर बन सकता है You need to make sure their PowerPoints look good. उनका जो पावर पॉइंट बनता है वो अच्छा दिखना चाहिए The font needs to be big enough so वो जो- everybody in the room can read it. अक्षर जो है पावर पॉइंट का अच्छा होना साइज का होना चाहिए How many of you have not been able to read my PowerPoint कितने today? लोग हैं मेरे पावर पॉइंट्स को नहीं पढ़ सकते आज Yeah. I don't have anything smaller than a 32 font. यहाँ में अक्षर का जो साइज है 32 फॉन्ट से नीचे कोई भी नहीं है Now tomorrow when I give the business presentation, my font might be a little smaller than 32, but I've got asked my designer to increase it for tomorrow's presentation. कल जो प्रेजेंट में दिखाऊंगा उसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है पर मैं अपने डिजाइनर को बोलूंगा कि उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए And how did I determine that? और मैं ये इसके बारे में कैसे सोचा Because I was in Siliguri while he was giving the business presentation with my presentation, and I was in the back of the room and I couldn't read some of it. मैं सिलीगुड़ी में था और किशोर ने मेरा प्रेजेंटेशन दिखा रहा था और मैं खुद मेरे प्रेजेंटेशन को पढ़ नहीं पा रहा था So I left there and I sent my designer an email and said, hey man, you need to increase the font. और फिर मैंने इमीडिएट मेरे डिजाइनर को ईमेल किया कि तू अपने फॉन्ट को बड़ा कर So it wasn't his fault, it was my fault. वो किशोर का फॉल्ट नहीं था मेरा फॉल्ट था It was my presentation he was using. मेरा प्रेजेंटेशन वो यूज कर रहा था Okay? So I'm looking at all of this stuff because these presentations are important. और मैं इस सभी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है Yeah, if the presentations are good, everybody in a market will build for the presentation. अगर प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो सब लोग इस प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं And if the presentations aren't good, people won't build for them. और अगर वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो उसको लेके आपको लाभ भी नहीं होगा कुछ When I started my business, I had 38 people at my first presentation, जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस मेरे पास 38 लोग आए थे प्रेजेंटेशन के लिए 68 at my second, 68 दूसरे बार 118 at my third, 118 तीसरे बार and that's when my sponsor said, Todd, next week you're doing the products, because he had done those first 3 presentations. उसके बाद मेरे स्पॉन्सर ने बोला इस सप्ताह जब आएगा तो तुम उसका प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट पार्ट तुमको करना पड़ेगा I was scared to death. और मेरे को इतना डर लगा था उस दिन My underwear was stuck to my butt. I was sweating so much. मेरे अंडरवेयर भी गीला हो गया था But I memorized the products. पर प्रोडक्ट के ऊपर मैंने पूरे मेमोराइज कर लिया था And I got up, I'd practiced in front of a video camera. और एक वीडियो कैमरा आगे रख के मैंने प्रैक्टिस किया And that next week, when I gave my first product presentation, we had 175 people at that meeting. और दूसरे वीक में जब अपना प्रेजेंटेशन दिया वहां में 175 लोग थे And then my sponsor said, Todd, next week, he gave me feedback, of course. उसके बाद मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को फीडबैक दिया और बोला नेक्स्ट वीक He said, next week, I'm going to do the company. मैं करूंगा कंपनी You do the product, compensation plan, and timing and trends, and then I'll wrap it up talking about the training and support. तुम करना प्रोडक्ट टाइमिंग एंड ट्रेंड और मैं उसके बाद मीटिंग को खत्म करूंगा So I gave that presentation. फिर मैंने दिया प्रेजेंटेशन He gave me feedback. फीडबैक दिया उसने मेरे को And the next week he said, Todd, you're going to do the whole presentation and I'm going to sit in the back of the room and watch. और बोला फिर टॉड तुम अभी पूरा प्रेजेंटेशन करना मैं पीछे बैठ के तुमको देखूंगा
I practiced all week because I had to do a good job. I had momentum going on in my business. और मैंने पूरा वीक प्रैक्टिस किया बिकॉज मेरे बिजनेस में मोमेंटम आ चुका था. And I did the whole presentation. He gave me feedback. और मैंने पूरा प्रेजेंटेशन किया. उसके बाद उसने मेरे को फीडबैक दिया. And then I ran the weekly meetings from then on. उसके बाद मैं हमेशा वीकली मीटिंग करता रहा. I had 400 people a week at my weekly meetings. मेरे वीकली मीटिंग में 400 लोग होते थे. And I made sure that everybody who gave a testimonial, that they were well trained before they got up there on how to give a testimonial. और मैं ये इसमें ध्यान देता था जो भी लोग हमारे टेस्टिमोनियल देंगे उनको मैं पहले ट्रेन अप कर दूं कि वो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे. I didn't risk having somebody come up here who hadn't been trained on how to give a testimonial and undermine the confidence of all the distributors who brought prospects to my meeting. मैं ये नहीं चाहता था कोई लोगों को मैं ऊपर ले जाऊं और वो हड़बड़ा जाए और हमारा पूरा इंप्रेशन खराब कर दे क्राउड के सामने. इसीलिए मैं सभी को तैयारी करता था मीटिंग में प्रेजेंटेशन या टेस्टिमोनियल देने से पहले. And all of you guys who have meetings in your markets, you need to take pride. They need to be great meetings so every distributor is proud to come and proud to bring their best people to your meetings. इसी तरह आप अपने मार्केट में जब मीटिंग्स दोगे इसी तरह आपके अपने लोगों को तैयारी करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो. And if you grow leaders who give great presentations, they build markets. अगर आप ऐसे लीडर्स को तैयारी करो जो अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके तो आपका मार्केट भी बहुत जल्दी डेवलप होगा. And then the sixth factor in developing leaders is you must coach and mentor your emerging leaders every day. इसके बाद है जो लोग उभरते हुए लीडर्स हैं उनको आपको कोचिंग करना है, उनको आपको मेंटर करना है डेली. And as you've heard me say, every little thing you see they can do better, you tell them. और जो जो चीज़ आपको ध्यान में आता है छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको बोलिए जहां वो काम कर सकते हैं. When you see things they shouldn't do, you tell them. जो चीज़ आपको नज़र में आता है कि उसको करना नहीं चाहिए था उसको बोलिए ये चीज़ आपको करना नहीं चाहिए था. And always remember, especially in this business, one of the great attributes of leaders in this business is great leaders get more out of their people than those people would get out of themselves. ये आपको ध्यान देना चाहिए. एक ग्रेट लीडर जो है वो दूसरे लोगों से इतना काम निकाल सकता है जो आदमी अपने खुद से नहीं निकाल सकता है. So your role is to develop your leaders, to help your leaders grow. आपका रोल है आपके लीडर्स को डेवलप करना, ग्रो करना. Help them become the very best they can be. सबसे बेहतर लीडर बनने के लिए उनको पुश करना. Great leaders develop great leaders, and great leaders develop more great leaders. तो ग्रेट लीडर्स अच्छा लीडर बनाता है और अच्छा लीडर्स बनाते हैं. And lastly, your ability to develop successful leaders is the single most important factor in advancing rank and living the unicity dream. सो सबसे लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ आपका जो एबिलिटी है एक लीडर को बनाना और उस लीडर को उभरते उभरते उसको और अच्छा बनाना ताकि आपका रैंक और आपका इनकम बढ़े. And it all starts with you. और ये सारा आपसे ही शुरू होता है. You can't teach people how to do something you're not doing. आप लोगों को सिखा नहीं सकते जो चीज़ आप नहीं करते. And that's why you need to strive for excellence at everything that's required of you to become a top leader with unicity. इसीलिए आपको अपने आप को बेहतर से बेहतर पुश करना है ताकि आप एक अच्छा लीडर बन सके यूनिवर्सिटी में. And I call it the duplication effect of leadership. Everything you do to get better influences every leader that you mentor and help. इसका मतलब है ये डुप्लीकेशन सिस्टम है. जो भी काम आप अपने ऊपर करते हो एक अच्छा लीडर बनने के लिए वही चीज़ आपके नीचे वाले लोग भी करते हैं अपने लिए. Well, I think we've had a great day one. What do you think? तो कैसा रहा आपका दिन? All right. Thank you.